Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, after covering the activity 13.2, let us go on a little assessment of it. The same topic, 13.1, production of electric charge, is the third lecture of the series. There's a small, self-assessment questions underneath this activity 13.2. The first question says, do you think amount of positive charge on the glass rod after rubbing it with silk will be equal to the amount of negative charge on the silk? You took a glass rod and you rubbed with silk. The question is there any increase or decrease in the amount of positive charge on the glass rod and the fur and on the silk cloth? Is there any difference in the charge? Remember, as per law of conservation of charge, you have read law of conservation of momentum, law of conservation of energy. Now, and similarly some other conservation laws. This law is the law of conservation of charge. As per this law of conservation of charge, net charge before should be equal to the net charge after. So the charge on the glass rod and the fur before rubbing, this means before rubbing, and the net charge on it after rubbing, they are equal. Therefore, there is no production of charge. The overall charge remains the same. It's just that some electrons go from one body to the other one. What would happen? Now, this is the second question that was there in the self-assessment. What would happen if a neutral glass rod is brought near a positively charged glass rod? He says, now you take a glass rod and you rub it with silk and then bring another glass rod which is not charged towards to each other. The question is, what would happen? Because of electrostatic induction, attraction takes place. This is what happened. In the next topic, we'll cover what is electrostatic induction. Thank you. Well, students, we now come to the second topic of electrostatics, which is about electrostatic induction. This is 13.2, and this is one of the properties of electrostatic charges, and this talks about the electrostatic induction. Electrostatic induction. Activity 13.3. Bring a charged plastic rod. Now take a plastic rod and bring a charged plastic rod near a suspended neutral aluminium rod. Now you have an aluminium rod which is neutral, this one, aluminium rod which is neutral, and you bring a plastic rod which has been rubbed with fur close to it, and you will find that attraction takes place. Now why attraction takes place in this case? This attraction shows that both rods must have unlike charges. Unless both the rods have different charges, attraction cannot take place. So aluminium rod is neutral, it has not been charged, and you bring a plastic rod which has been rubbed with fur close to it, but attraction takes place. This attraction reveals that both the bodies have acquired opposite charges. But the fact is, why it happens so? Charged plastic rod produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminium rod, which causes attraction. Now why does attraction takes place? Is because the plastic rod which has been rubbed with fur and has been brought near the neutral aluminium rod, this rod has after getting charged, it displaces the charged particles of this aluminium rod, and so attraction takes place. Now we will study further how that happens, but this is primarily due to the displacement of positive and negative charges on the neutral aluminium rod, which causes attraction. Total charge on aluminium rod is zero. When you say charge is, when you say that the aluminium rod is neutral, that means it should have no charge on it. The overall charge is zero. Attraction
not sure test of charge. Attraction is never a sure test of a body possessing charge. Is never a sure. Attraction is not a sure. Repulsion is a sure test that both have the same. But over here, total charge of aluminium is 0. Attraction takes place. You cannot be sure attraction is the cause of. So what we do? So this phenomena in which attraction occurred between a neutral body and a charged body is because of a phenomena known as electrostatic induction. Means this charge प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक रॉड है, इसने इंड्यूस कर दिया है दूसरी बॉडी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से चार्ज जो है ना वो अट्रैक्शन पे टेक्स प्लेस. दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक induction. I will tell you again. Take a neutral aluminium rod, bring a charged plastic rod close to it, and when you bring close to it, you will find attraction takes place. Now since you have read that attraction can only take place between unlike charges, that means we can assume that both the bodies have got now unlike charges, and that is why attraction takes place. But attraction of course is not a sure test that the aluminium rod is charged also. Therefore we say that attraction is not a sure test of a charge being possessed by a body. So this phenomena in which a neutral body is attracted by a charged body when brought near to it is known as electrostatic induction. And now through an activity we will try to further study this phenomenon of electrostatic induction, which activity is 13.2. Now this activity is very interesting. Please pay attention. Take two metal spheres A and B. Now A and B are two metal spheres. दो metal spheres हैं A and B, which are fixed on two insulated stands. उनके नीचे insulated stands लगाए गए हैं, so that insulated stands क्यों लगाए गए? इसलिए ताकि चार्ज जो उनका है वो जमीन में ना जा सके, वो डिस्चार्ज ताकि ना हो. So take two metal spheres A and B and place them on insulated stands. Now bring both of them together so that they touch each other. दोनों के नजदीक लो, दूसरे के साथ उनको छू दो. Now this part 1, take two spheres A and B, place them on insulated stands, bring them close together so that they touch each other. Now what do you do now? Now bring a positively charged rod near sphere A. अब sphere A के नजदीक एक positively charged rod ले आओ, and you bring close to it. Rod will attract negative charge. क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आप लेके आए हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा और इस तरफ जो है ना वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके और इसके दरमियान अट्रैक्शन है. सो नाउ दिस रिमेंबर दिस बॉडी दिस चार्ज रॉड इज नॉट टचिंग दिस थिंग. ये उसके सिर्फ नज़दीक लाया गया, लेकिन ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं. ए और बी जो है, A or B, they are touching each other in spheres, but this rod is not touching. Bring this rod close. Attraction takes place between positive and negative charge, and the negative charge comes close, and repulsion takes place between positive and positive, so positive goes away. D, part D. Negative charge will appear on sphere A. The sphere A के ऊपर जो है वो negative charge आ गया, and positive charge will appear on B, और B के ऊपर आ गया positive charge. Let me mark it for you. This is A, this is B. Okay. So negative charge appears on sphere A and positive charge appears on sphere B. Now in the presence, ये लफ्ज़ जो मैं बता रहा हूँ ये कैच है इसके अंदर. In the presence of the rod की मौजूदगी में, इस रॉड की मौजूदगी में, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसकी मौजूदगी में ना सेपरेट A and B, A और B को अलग कर दो. इन द प्रेजेंस ऑफ, रॉड को पहले नहीं रिमूव करना, रॉड को वहीं रखना, B को इसे अलग कर देना है. If you test the charges now, if you test the charges on sphere A and B, अब sphere A and B पर जब उनको रिमूव कर दिया आपने, तो अब आप टेस्ट करेंगे जब चार्ज, तो यहाँ पे जो है ना नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा.
After removing rod, the charges uniformly get distributed. एक और quality क्या है कि पहले positive charge rod के नज़दीक था ये negative charge, but when you separate them तो फिर ये evenly distribute हो जाता है सारे sphere A पे. After removing a rod, the charges uniformly get distributed. Equal and opposite charges appear on each sphere. This process, this phenomena is known as charging by induction. Charging by electrostatic induction कैसे होती है, इसको दोबारा repeat करता हूँ मैं. It is a very important phenomena. It comes in the examination कि आप किसी body को electrostatic induction से कैसे charge करेंगे. So activity 13.3, bring a charged plastic rod. एक plastic rod लो, उसको rub करो फर के साथ और उसके बाद उसको नज़दीक लेके आओ एक एल्यूमिनियम रॉड. Bring a charged plastic rod near a suspended neutral aluminum rod. एल्यूमिनियम रॉड जो है वो न्यूट्रल है. ये एल्यूमिनियम रॉड है, AL लिखा हुआ है. ये इसके साथ इसके नज़दीक प्लास्टिक रॉड जिस पर कि आप जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नज़दीक लेके आओ. Both of them will attract. Why does attraction take place? This attraction shows कि they have unlike charges. इससे पता चलता है कि उनका चार्ज अलग है, बट द फैक्ट इज चार्ज प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इस ये दोनों ये जो प्लास्टिक रॉड है इसने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, जैसे वह हमने देखा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन अकर हुई, जिसने ये अट्रैक्शन कॉज की थी. टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम रॉड इज 0. एल्यूमिनियम रॉड चूंकि न्यूट्रल था उसका चार्ज टोटल 0 था. अट्रैक्शन ऑफ कोर्स इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज. हमने कहा ना यहाँ पे कि चूंकि ये अट्रैक्शन हो रही है इसलिए इसका मतलब दोनों बॉडीज चार्ज है, लेकिन अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज था या नहीं था. अट्रैक्शन हुई थी, दोनों ने आपस में दूसरे के नज़दीक गए थे, लेकिन इट इज़ नॉट श्योर दैट अट्रैक्शन उसके ऊपर चार्ज था. इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. दिस फिनोमेना ड्यू टू विच अट्रैक्शन अकर्स, एक न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के दरमियान में, इस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. एक और एक्टिविटी करते हैं 13.2. अब इस एक्टिविटी में क्या होता है, ब्रिंग आपके पास दो आपके पास मेटालिक स्फीयर्स हैं. यू हैव 2 मेटालिक स्फीयर्स A एंड B. दोनों को इंसुलेटेड स्टैंड्स पे रखो ताकि चार्ज ज़ाया ना हो सके, और इस तरीके से रखो कि उसको टच करें. अब उनके नज़दीक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आओ. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को रिपेल करेगी, इसलिए एक स्फीयर के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे पॉजिटिव हो गया. रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन स्फीयर A while positive charge will appear on sphere B. Both separate both the charges in both the spheres A and B in the presence of the charged body of blood, in the presence of this rod which is charged. And if you test it, इसको यहाँ रखते हुए दोनों को separate करो. Now if you test A and B, you will find दोनों पे opposite charge हैं. After removing the rod, the charges uniformly distribute हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और आप जब इसको चेक करेंगे तो इस पर यूनिफॉर्म चार्ज होगा. यहाँ पर भी उतना, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना नेगेटिव, और यहाँ पे इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा. दिस प्रोसेस जिसमें इस तरीके से चार्ज एक्वायर होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बिकॉज दिस टू स्फीयर्स वर न्यूट्रल. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ इस चार्ज की प्रेजेंट की वजह से उस पर चार्ज इंड्यूस हुआ, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. गोया कि इस चार्ज बॉडी ने अपना असर उन स्फीयर्स के ऊपर डाला, उसके असर के अंदर आके इन पर चार्ज आ गया, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. आई होप यू विल मेक नोट्स. इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी ऑन द सेल नंबर्स दैट आई हैव गिवन यू. थैंक यू.